So in the next slide, we will form, or you can say we will check if the following statements are forming the AP or not. तो फर्स्ट एग्जांपल में जैसे कि हमें यहाँ दिया हुआ है टैक्सी फेयर. सो टैक्सी फेयर for the first kilometer is rupees 25, and for additional kilometer, each additional kilometer it is rupees 20. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो first term is what? This is 25. So our first term is 25, and in the next term 20 rupees additional kilometer. So 25 plus 20 will be 45. Again, if you are going to travel for the third kilometer, it is again plus 20. This is 65 rupees and so on. So this clearly forms an AP with A is equal to 25 and common difference D is equal to 20. So we can form the next term by adding 20 each time. Now the next question says cost of digging the well at rupees 250 for the first meter and the money rises by rupees 30 for each subsequent meter. इसका मतलब क्या हुआ? First kilometer के लिए there will be a cost of rupees 250 and for the second first meter के लिए 250 and then again next meter के लिए it will be plus 30. तो 250 plus 30 it will be 280 rupees. Then for the third meter it will be 280 plus 30. So this is 310 and so on. Yes, this is forming an AP with the first term as 250 and common difference being rupees 30. So we will form the next term by adding 30 again. That will be 340 and we can go on. Next, simple interest. Now, please ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा. Simple interest जो होता है, it always form an AP. And अगर हम compound interest की बात करेंगे तो it will not form an AP. If there is a one marker question which only asks for if you are given some amount, rate of interest and some years whether the simple interest will form an AP, you will directly say yes, it will. तो इस क्वेश्चन में अब आपका प्रिंसिपल जो है दैट इज रुपीज 1000 and rate of interest that is 10% and time हमें दिया हुआ है 10 years. तो हम 1 year का सिंपल इंटरेस्ट चेक करेंगे. अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100. तो जब आप फर्स्ट ईयर की बात करेंगे तो प्रिंसिपल आपका 1000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10 है, टाइम फर्स्ट ईयर के लिए हम ले रहे हैं तो T1 हो जाएगा एंड व्हेन यू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट इट विल बी रुपीज 100. Again, for the second year, principal will remain the same, which is 1000 only. 10% rate of interest. Second year के लिए again time मेरे 1 year की duration की मैं बात कर रही हूँ, divided by 100. So it will again be 100. So this process will go on for 10 years and always we get simple interest as rupees 100. Okay, so this is forming an AP with the first term as 100 and common difference D is 0. Remember, हम लोगों का जो AP होता है उसमें जो common difference होता है it can be positive, it can be negative, it can be 0. Now the next question is compound interest. We are having the same principle which is 1000 rupees. Rate of interest is again 10% and we have to find the interest for 10 subsequent year. अब यहाँ पे आपका जो compound interest होता है उसका formula क्या होता है? That is T within the bracket 1 plus rate of interest R divided by 100 raised to power T minus P minus principal. अब जब यहाँ पे आप फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो आपका P 1000 प्लस 1 प्लस R बाई 100 तो 10 बाई 100. तो यहाँ पे आपको 1000 विद इन दी ब्रैकेट 1 प्लस 10 बाई 100 और यहाँ पे हम फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट करेंगे. सो दिस इज 10 1 10 प्लस 1 तो 11 बाई 10 और यहाँ पे एक जीरो से कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास आ जाएगा 1100 और प्रिंसिपल अगर मैं 1000 सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो इट विल बी रुपीज 100. For the first year it will be rupees 100 but the change that will be here for the next year principal is not 1000 because in compound interest we get interest on interest as well. So for the next year principal जो आपका रहेगा that is 1000 plus 100 which is 1100. तो इस चेंज की वजह से जो आपका सेकेंड ईयर में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा it will be 110
एंड इफ वी मूव ऑन फॉर द थर्ड ईयर, अगेन आपका जो प्रिंसिपल हो जाएगा दैट इज 1100 हमारा पहले से था ना प्रिंसिपल सेकेंड ईयर का, तो इसमें आपका 1100 ऐड हो जाएगा, तो दिस इज 1210 प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर। अब प्रिंसिपल जो थर्ड ईयर का हमारा आ रहा है, इस पे जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे इट इज 121 एंड सो ऑन। So each time we get interest on interest, that's why it will not form an AP. The difference between the first two terms, check, difference between the first two terms is not equal to the distance difference between the second two terms. So this will not form an AP. And now the last statement, some say amount of air present in a cylinder if vacuum pump removes each time 1/4 of the remaining air. So now again this is the clue, remaining air. तो 1/4 of remaining air की अगर हम बात करेंगे तो no, this will not form an AP. तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका 1 मार्क का क्वेश्चन में आ सकता है, where you are given with some statement and you have to check if the statement will form AP or not.